everyone, welcome you all to my YouTube channel. My dear students, today we will do the questions of the exercise triangles. This video is for class 9th students of icse board. So let's do the questions of the exercise 8a from the chapter triangles, and in this video we will be completing the exercise 8a. The questions will be done from the book s.chand's publication. Remember, s.chand's publication, s.chand's icse mathematics. So in the last video I did the question up to 11. Today I will finish the exercise 8a. I start with question number 12. We have a triangle ABC right angled at B. Right angled at B. ACDE and BCGF are squares. ACDE and BCGF are squares. I hope you all know that in square all sides are equal and each angle is 90 degree. I mean AE, ED, CD, AC all are equal. BC, CG, BC, CG, GF, BF all are equal. And each angle of the square is 90. What the further information is? In this diagram, prove that first one, triangle BCD is congruent to triangle ACG. Second part, AG equals to BD. So these two triangles we have to prove congruent. Let us get these two triangles in the diagram. BCD, we need to join this B with D. So this is triangle BCD. ACG, we need to join A with G. So these two triangles we are going to prove congruent. This one and this one. I hope you all know that there are 4 tests for congruency of the triangles. These 4 tests are as
triple S, SAS, two sides and one angle, AAS or ASA, and the last one RHS. So we will try to get one test in this triangle so that we may say that the triangles are congruent. So it will be better to draw these triangles separately to make it more understandable. I am going to draw these triangles outside the figure. Please see B, C, D, and the second is A, C, G. As we discussed that all the sides of this square are equal, all the sides of this square are equal. So I made these symbols on CD, on AC. These are the sides of ACD, so they are equal in length. Now come to CG and this BC, they are also equal. So very easily we can see that in these two, we can see very easily that these two triangles have their two sides equal. So for congruency we need one more thing, and that is angle, included angle. If we get these two angles equal, then we can say that the triangles are congruent by SAS test. So let us see whether these angles are equal or not in the diagram. I start with this angle. This angle I see that is the sum of this one and this one. ACG is divided into two angles. One is 90, another one I mark it with A degree in the diagram itself. Which one I mark it with A degree? ACB. Okay. So I hope you all can see that and can tell me the angle ACG, I mean this angle, will be the sum of 90 and A degree. So this will be 90 plus A. Now come to this angle. In the diagram, please see, this part is 90 degree and this part is A. So this will also be 90 plus A. So very easily now we have got 3 parts of this equal to 3 parts of this. Therefore the triangles are now congruent by SAS test. Okay. So before proving the congruency, we will first write that the sides of this square are equal, the sides of this square are equal, and each angle is 90 degree. So before proving the congruency, I write that in square all sides are equal and each angle is 90 degree. Okay. Now you prove the congruency between these two triangles. So in triangle BCD and triangle ACG, since as I mentioned here, AC equals to CD, sides of square ACDE
then I have taken BCD as the first triangle, so I will write here CD equals to AC, BC equals to CG. Sides of square BCGF. Angle BCD equals to angle ACG. 90 plus A. Since we have shown the three parts of this triangle equal to three parts of this triangle, therefore no doubt these two triangles are congruent and the test name will be SAS. Therefore, by SAS test, triangle BCD is congruent to triangle ACG, and when these triangles are congruent, then I hope you all know that in the congruent triangles their corresponding sides and corresponding angles are equal. Therefore, their corresponding parts are equal. So, in second part we have to prove AG equals to BD. AG is the part of this triangle, BD is the part of this triangle. When the triangles are congruent, then their corresponding parts are equal, therefore AG equals to BD. So, second part, to prove second part, we will write since triangle BCD is congruent to triangle ACG, therefore BD equals to AG, since CPCTC, corresponding parts of congruent triangles are congruent. Next question, question number 13. What do we have in this question? This question has no diagram, my dear students. So, when the question has no diagram, we need to read out the question carefully. You go through the question carefully once, twice, thrice, unless you understand its every word, unless you understand the information given in the question, unless you understand what is actually asked. आप ज्योमेट्री में जब आपको कोई क्वेश्चन दिया होता है तो आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, जब तक कि उसके हर एक शब्द, हर एक इंफॉर्मेशन आपको ना समझ में आ जाए. आई मीन उसमें कुछ उस क्वेश्चन में दिया क्या है और उस क्वेश्चन में पूछा क्या है. अगर आप दो बातें समझ जाते हो कि दिया क्या है, पूछा क्या है, तब फिर आप सोचोगे कि कैसे करना है. इफ वंस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल, then only you can go for finding the solution. Otherwise, the solution what you write, for that solution you cannot score marks. Some of the teachers teacher says that write the formula and score the marks. At that point they are wrong. At that point they are wrong. बहुत से मैथ्स टीचर्स आपको आपके लोअर क्लासेस में बोलते रहे होंगे कि फार्मूला लिख दो, एक नंबर मिल जाएगा, फार्मूला रट लो, लिख दो, एक नंबर मिल जाएगा. बट आई एज ए टीचर ऑफ ICSE बोर्ड suggest you
informs you, I inform you that you don't get even 1 mark when you write the formula. When you write the formula, substitute the value correctly, then you score 1 mark. What am I saying? I am saying correct formula, correct substitution, when you make, then you score 1 mark, and after that you go for simplifying and finding the final answer. तो आप इस गलतफहमी में न रहें कि फार्मूला लिख देंगे या क्वेश्चन कॉपी कर देंगे, सो यू विल गेट 1 मार्क, कम से कम 1 नंबर मिलेगा. सो देयर यू आर रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग. सो फॉरगेट what the lower class teachers suggested you. What I suggest in mathematics, listen and follow, you will get good marks in the board exam, semester 2 board exam. Come here. Question number 13. So I will read it for you till it is not clear for me and for you what the question says. Question says that prove that the medians of an equilateral triangle are equal. So we have a word median, equilateral triangle. Some of us don't even know what the median in a triangle is. आप में से हम लोग कुछ को ये भी नहीं पता होगा कि एक ट्रायंगल में मीडियन क्या होता है. शायद कुछ को ये भी नहीं पता होता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है. सो आई एम गोइंग टू टेल यू बोथ द थिंग्स. अ ट्रायंगल हैविंग all equal sides with its each angle 60 degree is considered as equilateral triangle. तो हमारे पास कैसा ट्रायंगल है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल और हर एक एंगल 60 डिग्री. सो आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द इक्विलैटरल ट्रायंगल. नाउ सेकंड थिंग, median of a triangle, medians of a triangle. So I will start with median. So median is a line segment which joins the midpoint of a side with the opposite vertex. I draw a triangle and mark the midpoint of this side here as D. So when I join this midpoint D of this side with the opposite vertex, then only I'll get the midpoint. So this line segment is then only I will get the median, not the midpoint. Then only this will be called median. जब हम किसी एक साइड के मिड पॉइंट से उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ देते हैं तो उस लाइन सेगमेंट को हम मीडियन कह सकते हैं. सो हियर व्हेन आई नेम द ट्रायंगल एज ABC, so this AD is the median corresponding to the base BC. If this is median, then this will be called base. If this is base, then the median means the line segment which joins the midpoint of this base with the opposite vertex. तो हमको मेडियंस को इक्वल दिखाना है. किस में? इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका क्या मतलब? इसके तीनों साइड्स इक्वल और हर एक एंगल 60 डिग्री. गिवन triangle ABC is
equilateral. AD and BE are medians. AE and BD, AD and BE are medians. We can have one more medians, but I have done only two medians. We can have one more. Three sides a triangle has, so three medians are possible. To show AD equals to BE. If you want, you can have one more, but I don't draw. So since this is median to the base AC, therefore as I said that this will be the midpoint of the base AC. Proof. Please see. I take this triangle and this one. If you don't understand, I draw them here. A, D, C, B, C, E. Please look at AC and BC. AC and BC are the sides of equilateral triangle. They are equal. This angle is here. This angle is here. And it is common, or you can say 60 degree, 60 degree. So in this triangle and this triangle, these two triangles, we have got one side and one angle. We want one more thing, and for that we need to think more and more. प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये जो छोटा सा पार्ट है इसका हाफ है, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट, दिस इज मीडियन. This will be median only when D is the midpoint of BC. If D is the midpoint of BC means DC and BD are equal. तो ये DC इस BC का हाफ है और ठीक है, ये DC इस BC का हाफ है. अब इस ट्रायंगल में आइए EC, ये EC इस AC का हाफ है. तो मैं एक काम करता हूं आसान बनाने के लिए, इसको इसको और इसको तीनों साइड्स को आई हैव रिटन ना ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल. तो तीनों साइड्स को मैं x 2x सेंटीमीटर ले लेता हूं. 2x, द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स हैज 2x. So D is midpoint, no median, no. D is midpoint. So DC will be x, BD will be x, EC will be x, AE will be x. So this DC is x. This EC, look at the diagram, x. अब आप देखिए दोनों ट्रायंगल्स में 60 डिग्री 60 डिग्री, BC AC आर इक्वल. ये x, ये भी x इक्वल. देयरफॉर बाय SAS ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो चलिए अब लिखते हैं इन ट्रायंगल BCE and triangle ADC, since BC, ये BC equals to AC. क्यों भाई?
sides of EQ. I have written in short EQ for equilateral. Sides of equilateral triangle. Angle BCE equals to DCA (60°). Angles of equilateral triangle. DC equals to EC. DC equals to EC. Region halves of इक्वल साइड्स. क्या लिखा है मैंने, इसको ध्यान दीजिएगा. हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स. ये सारे साइड्स इक्वल हैं और ये उनके हाफ हाफ हैं. सो इफ टू थिंग्स आर इक्वल देन देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल. सो देयरफॉर बाय SAS test, triangle BCE is congruent to triangle ADC, and when these triangles are congruent, many times I have said that the corresponding sides are equal. ठीक, तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो तीसरी साइड कौन सी बची, BE, और इसमें कौन सी बची, ये. सो BE इक्वल्स टू AD. Therefore BE equals to AD. CPCTC. अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है कि BE एंड AD क्या है, ये BE एंड AD क्या है, मेडियंस. करेक्ट. Therefore मेडियंस आर इक्वल. अभी एक और पार्ट आप कर सकते हो बाद में, उसको मैंने अभी जानबूझ के नहीं खींचा था. ठीक, अब आप एक और मेडियन खींचिए. ठीक है, नाम दे दीजिए CF. CF दे दिया नाम. अब यहां आप चाहें तो AD इक्वल्स टू, अब तीनों लिखिए. आपको क्या शो करना था, AD BE CF. यहां अब ऐड करिए AD एंड BE CF, ऑल आर मेडियंस. तीनों मेडियंस पे इक्वल दिखाना है. मैंने दो जानबूझ के लिखा है, एक बार तीनों एक बार लिख देता तो आपको डायग्राम में कंफ्यूजन होता है. अब आपको क्या करना है, आपको अब इस लेंदी प्रोसेस से नहीं जाना है. आप लिखोगे सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल, कौन, आपने ADC लिया था, कौन सा लिया था, ADC. अब आप लीजिए ADB. सिमिलरली ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये ट्रायंगल ले लीजिए और ये वाला ले लीजिए, ये वाला. इस ट्रायंगल में CF मेडियन आ जाएगा. आपको CF मेडियन लाना है तो ये ट्रायंगल ले लीजिए और एक ADB ले लीजिए. सो CFB, किसको मैंने कहा, ट्रायंगल ADB एंड CFB आर कॉन्ग्रुएंट. अब इसको प्रूव नहीं करना है, सिमिलरली कॉन्ग्रुएंट. तो AD इक्वल्स टू CF. आप इसको इक्वेशन 1 मार्क करिए, इसको इक्वेशन 2 मार्क करिए. BE इक्वल्स टू AD आपने शो किया है और वही AD आपने CF के इक्वल शो किया है. तो व्हाट कंक्लूजन कैन यू मेक?
You can say that BE equals to AD equals to CF. Therefore, from 1 and 2, BE equals to AD equals to CF. So, medians of the triangle, equilateral triangle, are equal. Proved. Next, question number 14. We have diagram. Let's draw the diagram, then we will read it. ABC, DEF. I have drawn the diagram. Now I read it out. I have told you, you need to go through the question carefully and understand it word by word. Once, twice, thrice you will read it, unless you understand every information given in the question. So I go through the question. Given AC equals to DE. AC equals to DE. This information I have got from the question. Angle ACB equals to EDF. Angle ACB equals to EDF. Third, BD equals to CF. This BD equals to CF. Please see what I am doing. These BD and CF are equal, so I consider their length as x and write in the diagram itself x unit, and this DC, the length of DC I mark with y unit. मैं बोल रहा हूँ कि ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर होगा, बिकॉज दे आर इक्वल. आई गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन. मैं अपने से क्या मान रहा हूँ, दिस एज y, और इनकी लेंथ को क्या दे रहा हूँ, x. व्हाट टू शो, वी हैव टू शो AB इक्वल्स टू EF. AB and EF are the sides of these two triangles. So to prove this, we will have to prove these two triangles congruent. To prove these two triangles congruent, we will have to get 3 parts of one equal to the 3 parts of the other. आई बात समझ में? इन दोनों ट्रायंगल्स के इन दोनों पार्ट्स को, इसको और इसको इक्वल शो करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए इसके 3 पार्ट्स को इसके 3 पार्ट्स के इक्वल दिखाएंगे. आई होप यू नो दैट इन ए ट्रायंगल देयर आर 6 पार्ट्स, 3 आर इट्स साइड्स एंड 3 आर इट्स एंगल्स. जब हम इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा लेंगे तो concept of congruency says that their corresponding sides and corresponding angles are equal. Therefore ये वाली साइड इसके बराबर हम लिख देंगे CP CTC से. But first objective is to prove the congruency of these two triangles. For this, so I write in triangle ABC and triangle DEF, since you see AC equals to DE, given angle ACB
equals to angle EDF, this angle is equal to this angle EDF, and third thing, this BC, which is x plus y, and DF is also x plus y. So you can write BC equals to DF because both are equal to x plus y. डायग्राम में देखें, मैंने इसको x यूनिट लिया है, इसको y यूनिट लिया है, तो पूरा BC साइड कितना हो जाएगा? x प्लस y. इसको मैंने x लिया है. क्यों x लिया है? क्योंकि ये दोनों इक्वल थे. In the question I got this, from the question I have got this information that these two are equal. So I have considered their length as x unit, and by my side I have considered this CD as y unit. Therefore the whole DF will be x plus y and BC will be x plus y. So these two sides are equal because their length is equal to x plus y. Therefore by which test? Side, angle, side. Triangle ABC is congruent to triangle DEF. This side is equal to this side is equal to this side, this angle is equal to this angle. By SAS the triangles are congruent, therefore the part AB equals to AF, CP, CTC. Proved. Very easily we have got the result. Now the next one, question number 15. In the figure, let's draw the figure, then we will read out. BC, this is D, this is A, ABD is a triangle, AC is also joined, one more triangle we have, this is E, these two sides are equal in length and these two are also equal in length. So I hope you all know that in a triangle, when its two sides are equal, it is isosceles, and then the angles opposite to the equal sides of an isosceles triangle are equal. मुझे लगता है कि आप सबको अब पता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल हो तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ही है, और उन दोनों इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स जिनको कि बेस एंगल्स भी कहते हैं वो इक्वल होते हैं. आप देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स बेस एंगल्स हैं और वो इक्वल होंगे ही होंगे. आप इनको अपने तरफ से x डिग्री लिख लीजिए. ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो आप अपनी तरफ से इन दोनों एंगल्स को y डिग्री लिख लीजिए. हो सकता है हमको आवश्यकता पड़े. Now I go to the question, I read it and I understand it. AC equals to AE, ऑलरेडी सिंबल बना हुआ है. AC equals to AE. AB equals to AD, इसका भी सिंबल बना हुआ है. BAD equals to EAC, BAD equals to EAC, इसका सिंबल मैंने अभी नहीं बनाया है, बना लेता हूँ. और ये दोनों एंगल्स जब इक्वल हैं तो मैं इनको अपनी तरफ से A डिग्री लिख दे रहा हूँ अपनी तरफ से. ठीक है, ठीक.
Now we have to prove that BC equals to DE. To prove BC equals to DE, so BC and DE should be the part of the congruent triangles. Let's see where are these BC and DE. ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स के पार्ट्स अगर होंगे तो हम उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. देखते हैं BC कहाँ है. BC ओके, DE ये है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा हम लोग. कौन? ABC ऐसा सिंबल है, ऐसा सिंबल. तो इस y की आवश्यकता अभी तो नहीं पड़ी, कोई बात नहीं. मैं यहां पे अपने मन से यहां पे अब एक और क्या लिख लो, Z. तो BC, फिर से बोल रहा हूं, ये BC इस ट्रायंगल का पार्ट है और DE I will have to join DE, I think. Yes. Join it. A, D, E. अब इस दोनों ट्रायंगल में देखिए, BC ये है, DE यहाँ है. इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाते हैं तो तब ये कॉन्ग्रुएंट, C के हेल्प से दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ पे सिंबल्स बने हुए हैं, जिसमें भी आइए AD ऐसा सिंबल बना हुआ है, AE ऐसा सिंबल बना हुआ है. दो साइड्स इक्वल हो गए. अब इस एंगल को देखिए, इस एंगल को देखिए डायग्राम में, ये एंगल A प्लस जेड, BAC A प्लस जेड. अब इस एंगल को देखिए DAE, ये भी A प्लस जेड. लिख दीजिए डायग्राम में. वेरी सिंपली वी हैव गॉट द थ्री थिंग्स ऑफ दिस इक्वल टू थ्री थिंग्स ऑफ दैट. ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर. देयरफॉर द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय icse टेस्ट, एंड व्हेन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड BC इक्वल्स टू D. वेरी सिंपल. So proof. In triangle ABC and triangle ADE, since AB equals to AD, given AC equals to AE, given angle BAC equals to DAE, sorry, A plus Z. Therefore by SAS test triangle ABC is congruent to triangle ADE, and when the triangles are congruent, therefore the third side BC equals to third side DE. So we have proved these two parts equal with the help of congruency in these two triangles. Now the next question, question number 16. This is also figure based. Let's draw the figure. Question number 16. We have a line segment. This is P and here M.
This is Q, R, this point is S, given that PS is median and QL and RM are perpendiculars. QL and RM are perpendiculars. I hope you know that perpendiculars make 90-degree angle with the base. So if this is perpendicular, so this will be the base and this angle will be 90. If this is perpendicular to this, so this will be base, and this is called not only perpendicular, altitude to the triangle also. If this is triangle, so this can be considered as the altitude to the base SM also. So ये भी 90, ये भी 90 क्वेश्चन में बोला है. Prove that QL equals to RM. अभी मैं एक चीज ध्यान नहीं दिया और मैंने पढ़ा भी नहीं. PS is the median. PS is the median. तो मीडियन के बारे में पिछले क्वेश्चन में बताया था. अगर ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो ये दोनों इक्वल हैं और S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR. So when PS is median, S is the midpoint of QR. चलिए ये भी हो गया स्पष्ट. अब आगे क्या बोला है? Prove that QL equals to RM. एक बार फिर से बता दो, मीडियन क्या करता है ट्रायंगल में? मीडियन ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जोड़ता है. तो अगर ये मीडियन है तो इस वर्टेक्स को, इस पॉइंट को इसने जोड़ा, तो ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा, तभी इसको मीडियन बोलेंगे. और ये इस पूरी साइड को बेस बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग टू दिस मीडियन. सो QL इक्वल्स टू RM हमको शो करना है. चलिए ये दोनों ट्रायंगल्स हम लोग ले लेते हैं. क्योंकि QL इज द पार्ट ऑफ, हम बोल सकते हैं दिस ट्रायंगल एंड RM इज द पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल. सो वी विल प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी. फॉर कॉन्ग्रुएंसी वी नीड 3 थिंग्स: 2 sides 1 angle, 3 sides 2 angles, 1 side RHS, whatever is applicable we will apply here for congruency. So both triangles have 90 degree, one side equal, one more angle equal. So 2 angles of the triangle, this equal to 2 angles of this, and one side equal. Therefore the triangles are congruent by angle, angle, side, angle, angle and side. And when the triangles are congruent, then the parts QL and RM are equal. Very simple. So we will write proof. In triangle QLS and triangle RMS, since angle L equals to angle M, 90 degree. Question says write here 1, here 2. Angle 1 equals to angle 2. Vertically opposite angles, they are equal. QS equals to SR. PS is median.
to QR. Therefore, by angle side test, triangle QLS is congruent to triangle RMS. This triangle and this triangle are congruent. Therefore, QL equals to RM by CP/CTC. Proved. Next question. Question number 17. This 17 has no diagram. ABCD is a parallelogram. Right. I hope you all know that in parallelogram opposite sides, both pairs of opposite sides are equal and parallel. So ABCD is parallelogram. The side AB and AD are produced to E and F. AB and AD are produced to E and F. So that AB equals to BE, AD equals to DF, prove that triangle BEC and DCF these two triangles we want to show congruent. For congruency we need three things. BEC congruent to DCF listen to me carefully. This is parallelogram. So this side and this side are equal. This side and this side are equal. Okay. So AB and DC are equal. I mark with this symbol. AD and BC are equal. Opposite sides of parallelogram are equal. AD equals to BC, AB equals to DC, because opposite sides of parallelogram are equal. So I will have to make here different symbol, not the same. AB and BE are equal, given in the question. AB and DC are equal, properties of parallelogram. AD and DF are equal, given. AD and BC are equal, प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिए ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर मिल गया, दो साइड्स मिल गए। अब आइए आई राइट हियर 1, हियर एंगल ए एंड हियर 2। In parallelogram opposite sides are parallel also, so these are the corresponding angles. So 1 equal to A, these are also the parallel sides, so this angle 2 is also equal to angle A। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों इसके बराबर, इट मीन्स बोथ आर इक्वल। तो अब आपको तीन चीज़ें मिल गई, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, this angle is equal to this angle, this side is equal to this side, therefore by SAS the triangles are congruent, correct? But
To prove the congruency, we will first write that why are these equal. बस क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल दिया है, ये दोनों इक्वल दिया है, ये नहीं दिया है. सो वी विल राइट इट समवेयर दैट इन पैरेललोग्राम opposite sides are equal and पैरेलल. दोनों लिख लीजिए. और डायग्राम में सिंबल आपने ऑलरेडी बनाया है, बस पैरेलल का नहीं बनाया है, बना दीजिए. एंड यू विल नॉट लूज द मार्क, रिमेंबर इट. ओके. अब आप लिखेंगे इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल DCF, since BE equals to DC, आप यहाँ रीजन भी दे सकते हैं. कैसे, क्या रीजन देंगे आप? पहले लिखेंगे BE इक्वल्स टू AB, फिर उसके बाद लिखेंगे AB इक्वल्स टू DC, अब आइए BC इक्वल्स टू DF. अब ये इसके बराबर तो दिया नहीं था, कैसे हुआ? अब लिखेंगे BC इक्वल्स टू AD, और AD दिया था DF के बराबर. ठीक, इसलिए ये दोनों बराबर. तीसरा क्या आपने लिखा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. ये क्यों होगा? ये भी नहीं दिया है 1 2 के बराबर. So how have you got? Please show it here. Angle 1 equals to angle A, angle 2 equals to angle A. इसलिए ये दोनों इक्वल हैं. और ये क्यों इक्वल हैं? आप यहाँ CORRESP शॉर्ट में लिख दीजिए, मीन्स करस्पॉन्डिंग. सो देयरफॉर बाय कौन सा टेस्ट? साइड एंगल साइड. ट्रायंगल BEC is congruent to triangle DCF. Proved. So this question number 18 I'll do in the next video, because this video is getting longer, my dear students. So wait for the new video to come. Don't forget to like, subscribe and share my channel. I hope you all are now working hard for your examination and watching the video. So when you watch the video, like, subscribe and anything more when you want, you can write it in the comment box. Definitely I'll try my level best to fulfill your demand. Bye bye.